अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर 6 पे है, मिलिट्री फोर्सेस और टेररिज्म के बारे में है। Let me share the screen with you guys. स्कूल के बारे में आपने ऑलरेडी स्लाइड्स शेयर की थी, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। बेसिकली जो मिलिट्री फोर्सेस, कितने किस्म के मिलिट्री फोर्सेस हैं और वो क्या क्या काम करती हैं, कौन सी फोर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, लैंड फोर्स की, एयर फोर्स की, नेवल फोर्स की, देन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे, टेक्नोलॉजी पे कि किस तरीके से जो स्टेट्स हैं उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम किया, देन पैसेज ऑफ टाइम they were growing in their capacity in terms of technology, in terms of nukes proliferation. तो उस पर हम स्टडी करेंगे। देन कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्लान ट्रीटी जो है उस पर सीटीबीटी पे किस तरीके से उसको अमल में लाया गया, बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन, यानी कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है उन पे वर्क किए गए, उनके बारे में स्टडी किया। मोस्टली कॉमन चीज़ें हैं जो कि टेररिज्म से रिलेटेड, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड हमें आइडिया है। हम इस गोल के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। पहले फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है कन्वेंशनल फोर्सेस, उसका जिक्र किया गया, ठीक है। तो जो स्टेट्स हैं वो दो तरह की टैक्टिक्स यूज करती हैं। हमें या तो वो विद फोर्स, विद काइनेटिक ऑपरेशन डील करती हैं, या नॉन काइनेटिक ऑपरेशन के थ्रू वो आपकी इकोनॉमी को पैरालाइज कर सकते हैं, जो कि सुपर पावर होते हैं, मैनिपुलेशन को कट ऑफ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दो टैक्टिक होते हैं फोर्स यूज करने की। कन्वेंशनल फोर्स, a state leader in a conflict can apply various kinds of leverage to influence अपने आउटकम को, अपने रिजल्ट हासिल करने के लिए दो तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं। One set of levers represent non-violent means of influencing other states, such as foreign aid, economic sanction, and personal diplomacy, less tangible mean, including the use of non-morality and authority. और सेकंड वो है जिसमें वो आपको पैरालाइज करता है थ्रू ऑपरेशन, थ्रू by using the army, military forces. These levers are these levers set army marching, suicide bombers, blowing up missile fight. They tend to be costly to both the attacker and the attack. दोनों के लिए नुकसान ज्यादा होता है। Military force tend to be a last resort. आखिरी ऑप्शन होता है। Evidence also shows that the utility of military force relative to non-military force is slowly declining. देखें, after Second World War, we haven't seen any kind of major war because United Nations, establishment of UN, and after that, Declaration Act, proliferation, non-proliferation पे काम किया गया। Cold War start हुई। Cold War में हमने देखा कि इस्लाम भी एक full fledged जो ऑपरेशन से या वॉर से दुनिया और से रिलक्टेंट थी, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते थे। हमने पहले भी पढ़ा है मैनिंग ऑफ वॉर के कॉन्सेप्ट, किस तरीके से यूनाइटेड नेशन की कोशिशों से उन्होंने कोशिश की कि दुनिया पीस की तरफ मूव करे। 1970 में डेकेड ऑफ पीस को सेलिब्रेट किया। देन उसके बाद उन्होंने 2001 में पीस डेकेड का इस तरीके से जो वॉर का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे काम होता है। Yet most states still devote vast resources to military capabilities compared with the region. Okay, spend the 20,000 diplomatic personnel, 2 billion soldiers, spend about $30 billion a year on aid, about $7 billion including the rest of the world combined. पूरी दुनिया में US spend करता है। Security dilemma, states believe that they must devote large resources to military if other states are doing so. They get tit for tat. दुश्मन को spend कर रहा है तो मैं आपको भी spend कर रहा हूँ।
ये जो अपना डिफेंस, एक जो सिक्योरिटी डायलामा है, रॉबर्ट जर्विस इसी पे तो बात करता था, जो उसने ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया कि आप जब स्पेंड करते हैं तो आपका नेबर भी उसी तरीके से स्पेंड करता है, क्योंकि उसको पता है कि अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन से? Military capabilities divides into three types: conventional forces, irregular forces, and third weapons of mass destruction. पहले हम conventional forces के बारे में पढ़ेंगे, then हम irregular forces के बारे में पढ़ेंगे, and then weapons of mass destruction. Irregular forces में terrorism, infiltration, land forces, तो जमीनी फोर्स होती है जिसमें जिनका काम होता है, हमें लोग कहते हैं कंट्रोलिंग टेरिटरी, ठीक है, बॉर्डर डिफाइन किया जाता है कि कहाँ पे आपकी जो फोर्सेस है मूव कर सकती है, कितने बॉर्डर में, कितने वहाँ पे नहीं कर सकती। एंड जो मिलिट्री फोर्सेस, जो जमीनी फोर्स होती है, उसका काम टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन होता है, टेरिटरी को कंट्रोल करना। Whatever their ultimate causes and objective, most wars involve a struggle to control territory. Territory holds a central place in warfare because of its importance in the international system and voice. Borders define where a state's own military forces and rival states' military forces are free to move and free, not to move. Uh, जो rivals हैं वो कहाँ पे move नहीं कर सकते आपके territory. Military logistics make territoriality all the more important because of the need to control territories connecting military forces with each other. An army supply must flow from home territory along supply line to the field. इसका जो आर्मी सप्लाई बेसिकली हम आगे लॉजिस्टिक्स में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से कि क्या क्या एक फोर्स है लैंड फोर्सेस को फाल बनाने के लिए, वायबल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये अगर आपको लॉजिस्टिक्स नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, आपको फ्यूल, शेल्टर, खाने पीने की जो बेसिक जरूरियात जिंदगी नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, तो वो फौज पैरालाइज होती है। और जो जहाँ पे फौज लड़ रही होती है पहाड़ों पे, जगहों पे, वहाँ पे तमाम चीज़ें पहुँचाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आपने देखा 2020 में जो इंडिया चाइना के दरमियान जो लद्दाख कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो बेसिकली उससे पहले चाइना क्या कर रहा था, सियाचिन की तरफ रोड बना रहा था। रोड क्यों बना रहा था ताकि वहां से उनको इजीली लॉजिस्टिक्स जो है वो उनको बड़े चीप पड़ेंगे, अदरवाइज वो बाय एयर उनको बहुत महंगे पड़ते हैं, वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज। सो ये जो स्टेट्स हैं, जो उनकी आर्मीज हैं, वो इस तरह के यानी कि कदम उठाते हैं, किस तरीके से उन्होंने चीप मेथड यूज करते हुए अपनी फोर्स को ज्यादा वायबल बनाना। The most fundamental purpose of conventional force to take hold and defend territory. Basically, territorial defense to है, that was the prime objective of land forces. अब land forces में कौन कौन सी होती है? Infantry होती है, armor होती है, infantry होती है, weapons, rifles वगैरह होती है, और artillery होती है। Foot foot soldiers are called infantry. They use assault rifle and other light weapons, machine guns, heavy artillery of various kinds. Artillery is extremely destructive and not very discriminating. It usually causes the most damage. Armor, जो कि टैंक को डील करते हैं, armored vehicles in open terrain such as desert, mechanized ground forces typically combine armor, artillery, and infantry. They usually join together and then launch the force, attack the opposing party. In closed terrain such as jungle, cities, however, foot soldiers are more important for this reason. Armies of industrialized states have a greater advantage over poor enemies in open conventional warfare, such as in jungle, mountain, and mountain urban warfare. However, as in Afghan conceding such advantages are and achieve a more lighter armed force of motivated foot soldiers may ultimately prevail over an expensive conventional army. डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट फोर्सेज होते हैं। हर जगह टैंक जहाँ पे आप मूव नहीं कर सकते, टैंक इजीली मूव कर सकते हैं। बाद ऐसी जगह जहाँ पहाड़ होते हैं जहाँ पे टैंक मूव नहीं कर सकते, आप जो लैंड फोर्सेज है, इन्फेंट्री है, ये सब चीजें अपना रोल परफॉर्म करते हैं। तो जो फोर्सेज है उसके डिफरेंट किस्म है और उनका काम होता है कि टेरिटरी को कंट्रोल करना।
काउंटर इंसर्जेंसी क्या होती है? देखिए, इंसर्जेंट होते हैं वो एक जो पीस को स्पॉइल करते हैं। काउंटर इंसर्जेंट कि किस तरीके से आप माइंड मेकिंग करते हैं, लोगों के दिल जीतने की कोशिश करते हैं और उनको सॉफ्ट अप्रोचेज अप्लाई करते हैं और उनको बेसिकली आप स्पॉइल होने से बचा रहे होते हैं basically. Counterinsurgency have received growing attention in recent years because of Iran and Afghanistan. Counterinsurgency warfare often includes programs to try to win the heart and mind of population so that they stop sheltering the perimeter. In some ways, जैसे हमने देखा कि जब 9/11 के बाद हमें ये इशू बड़े आए थे कि जो कि तालिबान थे वो जनाब पश्तूनों के घर और जहाँ पठानों के घर और इस तरीके से वहाँ पे बना लेते थे और उनको शेल्टर प्रोवाइड करते थे because they believe that they were the mujahideen and they were fighting against Soviet invasion before 9/11 during Soviet Afghan war. So it was a kind of very confusing state for both the states and the local natives as well. In some ways, because counterinsurgency warfare is as much about political game as military strategy. So it is the most complex type of warfare. While battling armed factions of an insurgency, a government must essentially conduct a public relation campaign to persuade the population to abandon the movement while providing public services. उनको एजुकेट करती है, उनको ट्रेन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे बहुत सी बलोच लिबरेशन मूवमेंट है या इस तरीके से पीडीएम है, पीटीएम है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है। बेसिकली जो वो तमाम मूवमेंट जो कि स्टेट ये फील करते हैं कि जो कि एंटी स्टेट है, तो उनको रोकने के लिए पब्लिक का एक साथ देना बहुत जरूरी होता है। एक नैरेटिव बिल्डिंग पे काम किया जाता है। A government must be strong militarily but cannot be too brutal in the application of force. Less more of the population begin to support the guerrillas. जो गवर्नमेंट होती है उसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स होती है, लेकिन वो उसको अप्लाई करने में सिर्फ ब्रूटल नहीं हो सकते। गवर्नमेंट को बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। स्टेट में अनार्की ना पैदा हो जाए, स्टेट्स को कंट्रोल करना, और जो एंटी स्टेट फोर्सेस हैं उनको किस तरीके से कंटेन करना, तमाम गवर्नमेंट की सबके लिए नजर रखनी है। So common tool of guerrillas, insurgents and the government fighting them are landmine. लैंडमाइन बड़ा इजी होता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, which are simple, small and cheap container of explosive with a trigger activated by contact or sensor. These mines were particular focus. देखिए माइन जो होते हैं वो एंटी जेर जमीन दबा दी जाती है, मतलब वहाँ पे जैसे ही पाँव पड़ता है वहाँ पे या कोई भी वहाँ पे हरकत होती है, सेंसर की मदद से उसको जनाब मूवमेंट को फील किया जाता है, जनाब वो एक्सप्लोड कर जाता है मटीरियल, जिससे नुकसान होने का ज्यादा खर्चा होता है। These mines were a particular focus of public attention in the 1990s because in places such as Angola, Afghanistan, Cambodia, Bosnia, they were used extensively by regular military forces that never disarmed them. Long after such war and landmines continue to remain and kill civilians who try to re-establish their life in former warfare. As many as 100 million landmines remain from recent wars. They injure about 25,000 people a year. जो लैंड माइन है, जो यूरोप देख लें, अफ्रीका देख लें, एशिया देख लें, जहाँ जहाँ भी जो कि एक गुरिल्ला वॉर चल रही है या जो एक कहने के एक अनार्की की सिचुएशन है, वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे जनाब इस तरीके से ये यूज किया जाता है और ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। अब आ जाते हैं नेवल फोर्सेस को, जो कि पानी की फोर्सेस होती हैं, नेवी की, वाटर की फोर्सेस। In 2008 to 2012, navies of the Western power responded to the rapid growth of piracy in three of the world's vital shipping lanes: Somalia, south of the Suez Canal, and the Strait of Malacca in Indonesia, connecting the Indian Ocean with East Asia and more recently the border of West Africa. The Somali pirates, taking advantage of near anarchy in that country, established safe haven on shore and ventured out to capture dozens of ships, holding the vessels, cargo, and crews for ransom. सामान के बदले जनाब वो क्या कर पकड़ लेते थे और वो जनाब उन्होंने अपना एक जरिया माश बनाया था। जो पायरेट्स हैं उनका काम यही होता था। Shipping companies generally paid off millions of dollars per ship rather than
lose valuable goods and people. The pirates push the limits by capturing first a Ukrainian fighter loaded with tanks and weapons, and then a huge Saudi oil tanker with $100 million of oil. Racing to ships is very small, fast boats armed with automatic rifles and grenade launchers. So they toss up grappling hooks, climb the sides, and subdue the crew, typically within about 10 minutes. बेसिकली क्या होता था कि जिस तरीके से जब उन्होंने कोई कार्रवाई करनी होती थी वो क्या करते थे कि वो मेथड यूज करते थे जो कि चीप हो और फास्ट ट्रैकिंग हो, फास्ट अप्रोचिंग हो, जिसके जरिए जल्दी से वो अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकें विद इन नो टाइम। देन लॉजिस्टिक एंड इंटेलिजेंस की मैं आपसे बात कर रहा था शुरू में कि किस तरीके से कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से जनाब सोल्जर्स को उसके बगैर पैरालाइज हो जाते हैं, उनको तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करना। हमने वर्ल्ड वॉर के दरमियान भी देखा, देन आफ्टर वर्ल्ड वॉर भी जहाँ पे भी कोई क्रॉस बॉर्डर इंफ्लिक्शन हुई, चाहे वो हमने 62 में इंडो चाइना जो सीनो इंडिया वॉर थी उसमें देखा। तो ये इस तरह के लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस की अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको स्टडी कर लीजिएगा लॉजिस्टिक एंड इंटेलिजेंस को। इवॉल्विंग टेक्निक्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव चेंज्ड द नेचर ऑफ मिलिट्री फोर्स इन सेवरल वेज। देखिए जो बेसिकली हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना नॉर्थ साउथ के बारे में, जो कि पैरिटी है, एक डिफरेंस है, तो बेसिकली जो नॉर्थ ने साउथ को बेस बना के, यानी कि साउथ जो है कि जो लेस डेवलप है, थर्ड वर्ल्ड जो नॉर्थ जो है डेवलप है, तो बेसिकली उनको एक्सप्लॉइट किया गया और वो जनाब आगे बढ़ते गए, नॉर्थ आगे बढ़ता गया। तो ये ग्लोबलाइजेशन की बेसिकली एक ट्रेजेडी है ग्लोबलाइज वर्ल्ड की। तो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है ये भी ज्यादातर इससे जो बेस्ट है वो ज्यादा इससे फायदा उठाता है। Thus, the resort to force and international conflict now has more profound cost and consequences. Different latest तरह के weapons, जदीद equipments आ गए। So great power in particular can no longer use force to settle disputes among themselves without risking massive destruction economic. These technological advances undermine the territorial basis of war and the hard shell of the state itself. In recent years, this trend has accelerated with the use of unmanned drone aircraft, including drones armed with missiles, जो आज से 10, 15, 20 साल पहले आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे, अब वो कॉमनली प्रैक्टिस है वेपन्स वगैरह की, ड्रोन्स की। In addition to America's 7,000 drones in 2001, 2011, other countries have been rapidly acquiring them. China showed out 25 models in 2011. Russia, India, Pakistan, and Iran also have drones. Electronic warfare क्या होती है? Information warfare refers to the use of electromagnetic spectrum, जो कि electronic media के जरिए, social media के जरिए लड़ी जाती है, and in critical is critical to all technologically advanced military forces. Strategies for cyber war, disrupting enemy computer network, hacking जो होता है उनका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम उसको हैक कर लेना, तो उसको कंट्रोल करना। Even hacking into bank account electronically may figure prominently in future war, although they have not yet. Cyber attacks are an issue of growing importance in international relations, with Chinese, Russian, and American hackers constantly probing each other's system. स्टिल्स टेक्नोलॉजी क्या है कि आप किस तरीके से रडार सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, यूजिंग स्पेशल रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल अनयूजुअल शेप्स इन एयरक्राफ्ट मिसाइल एंड शिप्स टू स्कैटर एनिमी रडार, उसको बेसिकली डाइवर्ट करते हैं, एक किस्म के कह दें कि चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। जो हवा में जो रडार सिस्टम है उनको कह लें आपकी उनकी आप एक किस्म के उनके जैसे कि आप अगर मैं सिंपल वर्ड में नौसरबाजी करते हैं, क्या आप उनको डाइवर्ट कर देते हैं, उनकी वेव्स को, रडार सिस्टम उनकी वेव्स को डिफरेंट ट्रैक पे मूव कर देता है। स्टेल्थ इज एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी एंड फ्रंट टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसके लिए आपको ट्रेन लोगों की जरूरत होती है। अच्छा, दैट वाज द कन्वेंशनल जो फोर्सेस से, ये वो हमारा ऑब्जेक्टिव 1 था। नाउ द ऑब्जेक्टिव 2 इज अबाउट टेररिज्म। टेररिज्म पे हमने बहुत बात की हुई है पहले भी, टेररिज्म क्या है, किस तरीके से फैल रही है, काउंटर टेररिज्म से डिफरेंट है, गुरिल्ला वॉर है, प्रॉक्सी वॉर है, civil war है। The US State Department listed 45 foreign terror organizations in 2010. Some are motivated by religions like Al-Qaeda, but others by class ideology or by ethnic conflict, nationalism. ये different
ये नाम दिए हुए कि एक एग्जांपल दिए कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट एजेंडा के तहत मूव कर रहे हैं. Terrorism refers to political violence that targets civilians deliberately and indiscriminately. Beyond this basic definition, other criteria can be found. अच्छा एक चीज याद रखिए कि remember that there is no fixed definition about terrorism. You know, we have read about in constructivism that anarchy is what states make of it, and relationship at international level are always constructed and reconstructed. So the I mean it is very much clear that from one man's terrorist and for other man is freedom fighter. जो हमारे लिए टेररिस्ट है वो दूसरे के लिए फ्रीडम फाइटर है. नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के लिए चैलेंजिंग है, थ्रेटनिंग है, और जबकि ग्रेट ब्रिटेन का वो फ्रेंडली है. So how you construct the reality, how you, narrate the, जो कि आप क्या कहेंगे उसको, जो कि आप जो भी चीज होती है आप इंटरनेशनल लेवल पे एक नैरेटिव बिल्डिंग किस तरीके से करते हैं. Terrorism refers to political violence that targets civilians directly and indiscriminately. Beyond this basic definition, other criteria can be applied, but the definition becomes politically motivated. One person's freedom fighter, another person's terrorist. More than guerrilla warfare, terrorism is a shadowy world of faceless enemies and irregular tactics marked by extreme brutality. अब ये जो टेररिज्म है, द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ टेररिज्म साइकोलॉजिकल. जाहिर है आप क्या करते हैं, टेररिज्म का बेसिक मकसद ही आपके साइकोलॉजिकली आप कंट्रोल करना होता है. एक जो एक खौफ की फिजा पैदा करना होता है. In part, the effectiveness of terrorism in capturing attention is due to the dramatic nature of the incident, especially as shown on television. Terrorism also gain attention because of the randomness of victims. Although only a few dozen people may be injured by a bomb left in the market, millions of people realize उनके ज़हन में खौफ पैदा हुआ. It could have been me because they do shops in market. आप भी हो सकते हैं कि यहाँ पर अटैक किया, वो एक खौफ की फिजा पैदा हुई. Attacks on airplanes augment this fear because many people already fear flying. Fly करने से डरते हैं. Terrorism thus amplify a small amount of power by its psychological effect on large population. This is why it is usually a tool of the weak. The classic cases of terrorism from 1970 to 2001 attack are those in which non-state actor use attack against civilian by secret. कहीं पे वो हाईजैकिंग की टेक्निक यूज करते थे, कहीं वो सुसाइड बॉम्बिंग की यूज करते थे, कहीं पे वो कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर देते थे. इस तरीके की टेक्निक यूज की जाती है. Radical political factions or separatist groups जो होते हैं, hijack or blow up airplane or plant bomb in cafe, clubs or other crowded. For example, Judgment Radical seized a school in Westland, a small city in the SS region in 2004. For 3 days, they held nearly 1,200 children, parents, and teachers without food or water. When Russian troops stormed the school, more than 300 people died, including 172 children. So, how brutal the activity is. Some researchers have attempted to systematically analyze when particular types of terrorism, such as suicide bombing, are effective at achieving the goal of terrorist organization. According to one study, suicide bombing, rather than an irrational violent follow strategic pattern. In particular, they occur most frequently against democracies rather than autocracies. Obviously, mostly autocracy में जो वन मैन शो होते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली उनका टारगेट नहीं होता, डेमोक्रेटिक वैल्यूज उनको तबाह करना उनका ज़्यादा prime concern. Still, this same study conclude that this terror tactic has not been particularly successful at achieving significant growth. The basic maqsad होता है intimidate करना. Terrorists are more willing than states to violate the norms of the international system because, unlike states, they do not have a stake in that system. उनके कोई stakes नहीं होते, उनको कोई concern नहीं होता. Conversely, when a political group gains some power or legitimacy, its use of terrorism usually diminishes. वो एक मेन स्ट्रीम है. जैसे आपने तालिबान को देखा, तालिबान रजीम को एंड करने में कामयाब हो गए. अब उसे yesterday I have a meeting with one of my friend and he
third secretary, diplomat at Kabul, and he was telling me that they have a strong hold in Afghanistan. अब वो चीज नहीं है. I mean, you can freely move the children, women, they can freely move on board, and that was not the activity in the past. So this was true of the Palestine Liberation Organization during the peace process in 1993, as well as the Irish Republican Army starting in 1992. Then the state-sponsored terror. Refer to the use of terrorism by states, usually under control of the state's intelligence agency, to achieve political aim. In 1988, a bomb scattered pieces of Pan Flight 103 over the Scottish countryside, pumping the fields for decades. Investigators found fragments of a tape recorder that had contained sophisticated plastic explosive. The US and British government had identified the Libyan intelligence agent responsible in 1992. Backed by the UN Security Council, they demanded that Libya turn over the agents for trial. When Libya refused, the UN imposed sanctions, including a ban on international flights to or from Libya. Then Libya को sanction के बाद क्योंकि Libya जो attack में Libya के जो कि intelligence agency थी उसके involvement के शवाहिद मिले थे. In 1999, Libya turned over the suspects for trial and two received life in prison, while a third was acquitted. And UN suspended its sanction in 2003. Libya formally took responsibility for the bombing, struck a multi-billion-dollar compensation deal with the victim family, and regained a normal place in the national community. So all the things were going on. It's state-sponsored terrorism होती है और किस तरीके से यानी कि उसको एक्सरसाइज किया जाता है. ये भी आपको जाहिर है कि इसका अंदाजा सेक्शन बर्दाश्त किया. काउंटर टेररिज्म क्या है जो कि स्टेट मेथड यूज करती है टेररिज्म को कंटेन करने. वो प्री टेररिस्ट एक्टिविटी भी हो सकते हैं, वो पोस्ट टेररिस्ट एक्टिविटी. Just as the method used by terrorists have become more diverse over the past decade, so have the policies implemented to prevent terrorist incidents. Debates over how to best prevent terrorist attacks are often heated, since there are also debates about why individuals engage in terrorist attacks. In the first place, policies to combat terrorism can be placed along a spectrum involving more or less force in confronting terrorism and terrorist organizations. On the non-violent end of the spectrum of wars of economic development of these. Again, terrorism को contain करने के लिए different means. एक तो होता है जैसे मैंने आपको बताया था पीस कीपिंग एंड पीस बिल्डिंग पे स्पेंड करते हैं. आप एक तरफ तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्रश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप स्टेट्स में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि आने वाले वक्त में आप वहां से उसका बिल्कुल सफाया कर देते हैं. ये इस तरह के स्टेट डिफरेंट एक्टिविटीज यूज करती है. देन थर्ड ऑब्जेक्टिव है इसका वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन. I think this is the last objective of mass destruction. The last objective is nuclear strategy and arms control. चलिए ये दो ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ पे हो गए हैं. इस मीटिंग को क्लोज करूँगा. देन मैं नेक्स्ट टू ऑब्जेक्टिव्स के लिए अलग से रिकॉर्ड करूँगा. Thank you.